Welcome all, welcome all. You're all welcome, beta. You're all welcome. We are now in lecture number 5. Wait. Very happy good evening, beta Mukul. Are you all able to hear me? Audio and video is clear to all of you, beta. Audio and video is clear to all of you. Okay, we will wait for next 30 to 45 seconds approx. Share class link with your friends too, beta. Okay, very good, Mukul. Very good. बेटा यू हैड कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 1 2 3 4. मुकुल आपने कंप्लीट कर लिया 1 2 3 4 लेक्चर. ओके वेट. वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा ऋषिकेश. वेरी गुड मुकुल वेरी गुड. नाउ numerical methods chapter will take approximately 3 more lectures only. Okay, today I am going to discuss secant method and fixed point iteration method with all methods rate of convergence. After today, in next lecture, that should be lecture number 6. In lecture number 6, you will learn trapezoidal rule, Simpson's rules. After that, in lecture number 7, I will discuss Picard's method and Euler's forward method and backward method, followed by Ranjakatta method in lecture number 4, 5, 6, 7 and 8. That means total 8 lectures. ओके दैट मीन्स 3 more. ओके सो चलो बेटा हम लोग फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं. आई होप अभी तक आप लोगों ने सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिया है. यू ऑल कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 1 2 3 and 4 in a beautiful manner. So today I am very happy to start lecture number 5. Till now in solutions of in this sub chapter, solutions of algebraic and transcendental equations, you had seen first Newton-Raphson method, Newton-Raphson method. After Newton-Raphson method, you had seen bisection method, and then we had completed Regula-Falsi, or also known as false position method. Okay, so completed. 2 more methods, important methods are there. One known as secant method, and next one known as iterative method, or it is also known as fixed point iteration method. Okay beta, so today we will discuss these two, number 4 and number 5. Okay, with full filling and with homework questions. Beta, you had completed homework of lecture number 4.
प्लीज टेल इन कमेंट सेक्शन यस और नो। आप सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया ना? बिकॉज अगर आप मेरे साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलोगे, ये मान लो कि जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट करते जाएंगे बेटा, फॉर योर गेट एग्जामिनेशन मार्क्स 100% सिक्योर हो गए आपके। योर मार्क्स विल बी सिक्योर फॉर योर गेट एग्जामिनेशन 100%। ओके, इफ यू कंप्लीटेड ऑल होमवर्क। ओके, यस सर, कंप्लीटेड ऑल। ओके बेटा, वेरी गुड। मजा आया बेटा जयंत टिल नाउ? मजा आ रहा है मैथमेटिक्स में विदाउट एनी प्रेशर? कोई प्रेशर तो फील नहीं हो रहा ना? एवरीवन इन फ्री मैनर, बहुत आसानी से सब कुछ समझ आ रहा ना? मैथ बहुत इजी होती है बेटा। मैथ अकॉर्डिंग टू मी इजीएस्ट सब्जेक्ट। व्हेन आई वाज इन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास और सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास, इवन इन बीटेक जिस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, माई स्टडी स्टार्टेड विथ मैथ। फिर बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। मान लो 4 घंटे की स्टडी करनी है घर पे, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे स्टडी करने का है। उन 5 घंटे में से स्टार्टिंग 1 आवर मैथ, उसके बाद से बीच में कुछ पढ़ लिया, उसके बाद जब नींद आने लगी रात में, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर उठा लिया मैथ, फिर मैथ ही लगाते लगाते काम खत्म। तो बेटा मैथ इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। ओके, बस अगर आप फील कर लिए, समझ लिए, चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देख लिए, देन इससे इजी कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स है। यही वाला मेथड है, यही वाला मेथड है, यही मेथड है, सारे मेथड देख लिए, लिटिल बिट प्रैक्टिस, 13/13। ओके, सो नाउ secant method. But this secant method is very very easy. Why easy? In previous lecture, I discussed already one beautiful method, that was Regula-Falsi method. Regula-Falsi method. Okay, in this method you had seen that for any iteration, like if you want any nth iteration, then a simple formula was a f b minus b f a upon f b minus f a. So for each iteration, for each and every iteration, you are going to find what should be our a and what should be our b in case of Regula-Falsi method, such that fa into fb must be less than 1, that is negative. You had seen in Regula-Falsi method. Secant method formula is same. In secant method, the iterative formula is 100% same. But in secant method, need not to find fa fb less than 1. Just go on. Like this formula can be written as in case of secant method. See here beta, it's very very easy. बहुत ही ज़्यादा आसान है. It's very very easy. It's very very easy. Okay, like suppose in first iteration, you know na, initial interval is given in your problem. So you know what is my x naught value and what is my x1 value. This x naught and x1 is what? This x naught was your a, this x1 was your b. This x naught was your a and b was x1. Very easy. This is initial interval or initial guess. This is initial estimate. This is initial estimate. X naught equals to a, x1 equals to b. This is our initial estimate. Now, after that, you got x2 with the help of this beautiful iterative formula, and this x2 was not our second iteration. Not we got the value of root after second iteration. Here I am writing x2. Here I am writing, हमने लिखा है बेटा x2. I am writing x2, but this is my first iteration. This one I got just after performing my first iteration. After performing my first iteration, I got x2. Suppose I am assuming x2 is x2.
In case of Regula-Falsi method, now you are going to search that fa into x fx2 is negative or fb into x2 is negative. If fa into x2 negative, then for next iteration, in case of Regula-Falsi method, you are going to choose this a as a and this as your b. भाई रेगुलर फॉल्सी मेथड में आप देखते थे ना कि अब एफ ए और एफ बी में से वो कौन सा है जिससे एफ एक्स टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, ये सेटिस्फाई होगा दिस वन. बट इन केस ऑफ सेकेंड मेथड हमें नहीं मतलब है, वी डोंट वांट टू नो कि x2 के साथ एफ ए एफ बी कौन सा निगेटिव आ रहा है. जस्ट चूज लेटेस्ट वन. दैट मीन्स फॉर नेक्स्ट इटरेशन, in previous iterations b is now your new a, this is your a and this is your new b. In this manner in this manner, after performing second iteration, you got another value x3. Suppose x3 is x3. Now for next iteration, this x2 is now my a new. For next iteration, this is my a and now this is my b. I hope you got the concept बेटा, कि हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे. हमें एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन वन ये सर्च करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू सर्च एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन वन और नॉट लेस देन वन. इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? फटाफट बेटा बताएं. सो इन दिस मैनर you can form a beautiful formula. Wait, I'm adding one more slide here. In this manner, this can be written as a beautiful formula. So formula or iterative formula for secant method. If I want to write iterative formula for secant method, then I can write in a very easy manner. I can write this beautiful formula in a very easy manner. Like you want to put n equals to 1 for first iteration. If n equals to 1 for first iteration, so you can write here x naught x1 is given in your problem. X naught x1 should be given in your problem. If nothing is given, then you can choose x naught and x1 by trial and error method, such that by x naught you got negative value or positive value. If negative by x naught, then positive by x1. That means fx naught dot fx1 मस्ट बी लेस देन वन. ये तो आपका होना चाहिए. अगर इनिशियल इंटरवल नहीं दिया, इन दिस मैनर आप इंटरवल को चूज करोगे, उसके बाद से आपको तो परफॉर्म करने को नहीं बोलेगा कितना इटरेशन. दे विल आस्क यू राइट आंसर, तो परफॉर्म करते रहेंगे इटरेशन. यू आर परफॉर्मिंग तब तक जब तक कि जितने डेसिमल प्लेस तक उसने पूछा उतने डेसिमल प्लेस तक हमें लगातार 2 इटरेशन में सेम वैल्यू ना मिल जाए. ओके, सो हियर दिस इज योर फॉर्मूला x and this is your first iteration. So you can write x n n equals to, you are going to put 1 now, so you can write this as first iteration x n plus 1. Okay, 1 1 2 x naught x1 was your initial. Okay, so it can be written as next one x n minus 1. So here f x n, so minus x n. Okay, very good. And here f x n minus 1 and whole upon f x n minus f x n minus 1. But I need not to remember this formula.
ये तो हमें भी याद नहीं था, हमने तो बना दिया अभी फटाफट। ये सब याद करने वाली चीज़ें नहीं है, नीड नॉट टू रिमेंबर, जस्ट नो बेसिक्स। इफ यू नो बेसिक then definitely you can crack any problem relating this method. Okay, now you can see here, you can see, suppose I am going to perform first iteration. I am going to perform first iteration. So for first iteration, 100% my x naught and x1 I know, because this interval will be given. Okay, और नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से लो, तब वो आपको कहेगा नहीं कितना इटरेशन करना है, तब तक इटरेशन करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि आप राइट आंसर तक पहुंच नहीं जाते। सेम टू सेम दो इटरेशन में आंसर नहीं मिलने लगता। सो हियर फॉर फर्स्ट इटरेशन यू कैन पुट n equals to 1. Now you can see x2 can be written as x naught f x1 minus x1 f x naught whole divided by f x1 minus f x naught, f x1 minus f x naught. Similarly, once you got x2, now for second iteration, you know x1, you know x2. Use x1, x2 and put n equals to 2. So now you will get x3 equals 2 in place of x0. Now x1 will be there, x1 fx2 minus x2 f x1 upon fx2 minus fx1 and go on. ओके, जितने इटरेशन आपको कहता है, या अगर नहीं कहता इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन, सो परफॉर्म दीज इटरेशंस till you got same values in successive iterations. Okay, so beta, is it clear to all of you? Now we are going to apply this secant method on beautiful numerical. Okay, so this is your beautiful problem number 29 of numerical methods. Here, perform 3 iterations of the secant method to find the real root of the equation x cube minus 5x plus 1 equals to 0 lies in the interval 0, 1. It's very easy beta. This is very easy. Here, first write fx. You can see beta, RHS is 0, that means LHS is your fx. So our fx is x cube minus 5x plus 1. So this is our fx beta. This is our fx. And also, I know what is the value of x naught. It's 0. What is the value of x1? It's 1. So for secant method, you need to calculate, you need to put fx naught now. So I am calculating here f x naught, that is f0. So f0 is, or to reduce confusion, first I am writing here f x naught. f x naught means x naught is 0 here, so f0. So here you can see 0 cube will be 0, minus 5 into 0 will be 0, plus 1. So this is 1. Similarly, calculate f x1. So f x1, that means f1. f1. So 1 cube will be 1, minus 5 into 1 will be 1, and sorry, 5 into 1 will be 5, and plus 1. So it should be minus 3. Okay. Now we have to perform 3 iterations, that means x2, x3, x4. x4 will be our answer. x4 will be our final answer. Okay, so I am going to perform first iteration here. For first iteration, put n equals to 1. So you can write x2 equals to x2 equals to, so here x naught fx1 minus x1 fx naught upon fx1 minus fx naught. Suppose but by mistake in examination you don't know, here you are going to start with x1 or x naught, आपको याद ही नहीं आ रहा, अब क्या करोगे? No problem beta, see here x2 I forget, and by mistake I am writing here x1. No problem. So with x1 write fx naught minus x naught, right here f x1. So in denominator this fx naught
minus fx1. You can see beta same to same. If you are going to take common from numerator and denominator, you will get same formula for x2. Okay beta, so is it crystal clear to all of you beta? Is it clear? Chalo beta, please perform this iteration and tell me the value of x2. Come on everyone beta, please tell me the value of x2. Perform everyone beta. Jayant told me 1. Okay, 1 1 1. No beta, it's not 1. Check it again beta. 0.25. No beta, it's not 0.25. 0.25 तो नहीं आ रहा बेटा, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो आप लोग. x2 की वैल्यू x0 की जगह 0 रखोगे ना, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 माइनस x1 is 1 and fx0 is 1 and whole divided by fx1 is -3 and minus fx0 is 1. ओके, शायद सही है, शायद 0.25 ही आ रहा है क्या, एक मिनट को चेक कर लेते हैं. x2 माइनस या 0 हो गया, सो इट्स -1 and -4. या वेरी गुड वेरी गुड, 0.25 is correct. 0.25 is correct. Now immediately calculate fx2 for next iteration. If x2 is 0, once you got, that means you are already got real root, क्योंकि x2 की उस वैल्यू पे जब 0 हो जा रहा है फंक्शन ही, that means that was your real root. So no need to perform next iteration. Okay, so fx2 0.25 cube minus 5 into 0.25 and plus 1. Please perform it beta and tell me the value of fx2. Please calculate this for me. 0.25 cube minus 5 into 0.25 plus 1. Tell me beta how much, कितना आ रहा है भाई? How much beta? I'm waiting for your comments. Tell me everyone beta. How much? What is the value of fx2 beta? Tell me. Is it minus 0.234375? Is it correct or something wrong beta? Click check this, check कर लो भाई. Is it correct beta? Okay, so now I'm going to perform next iteration. Second iteration. So I'm going to put n equals to 2. चेक कर लेना बेटा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो देन इमीडिएटली इन्फॉर्म मी. ओके, नाउ चेक दिस बेटा. वेट, okay, so n equals to 2, so our formula will be x2 equals to x, 3 equals to x1
fx2 minus x2 fx1 whole divided by fx2 minus fx1. Okay beta, now put the value of x1. X naught is 0. Okay, x1 is 1. Okay, x1 was 1 and 0.25, 1 and 0.25. So this is your x1 fx2 minus 0.234 minus 0.234 375 minus x2 was 0.25 multiplied by fx1. Where is fx1? Minus 3 whole divided by minus 0.234375 and minus 3. Okay, सही है ना? Okay, very good. Now please tell me beta, what is the value of fx3 x3? x3 कितना आ रहा है बेटा? How much? Please calculate beta. Minus 0.234. Okay, very good. Minus 0.234 375 minus 0.25. So ये हो जाएगा आपका plus 0.25 into 3 and whole divided by minus 0.234 375 and plus 3. Is it 0.186 beta? 0.186440678. So you can write 441. You can write 441. So this is your x3. But in your problem asked for 3 iterations. So perform one more iteration beta. So for third iteration, very good beta Mukul. For third iteration, put n equals to 3. And before going to third iteration, first calculate fx3. Okay, so it's 0.186441 cube minus 5 into 0.186441 and I think plus 1 was here. Let me check. Okay, nice. So 0.186441 whole cube minus 5 into 0.186441 and plus 1. Now I got fx3 as, now you can see beta, the value of function approaching 0. That means now you are more closer to real root. That means now you are more closer to the real root. Okay. So now final iteration I am going to perform. Final iteration. Please perform this equation, this iteration for me. फटाफट आप करके दिखा दें इसे. So x4 can be written as x2 fx3 minus. In your examination, no need to write formula every time. Just take values directly from previous iteration. Okay. So here x2 was 0.25 and fx3 was 0.074276. Okay, and minus x3 0.18644 into fx2. Where is fx2? fx2 is minus 0.234375. I think इधर दिख नहीं रहा होगा आपको. नो नीड टू वरी, आप परफॉर्म करें, हम अलग परफॉर्म कर रहे हैं. यार को पिक्चर थोड़ी छोटी कर देते हैं. वेट. ओके, नाउ you can see and whole upon fx3. So fx3 was 0.074276 minus fx2. वेरी गुड बेटा जयंत. fx2 कितना था? fx2 यहीं से देख लेते हैं. fx2 was minus 0.234375 बेटा. Okay, so as
Zenth calculated is 0 point, yeah, absolutely correct. Same to same हमने भी ये calculate किया हुआ है, so no need to calculate it again. Okay, up to 5 decimal place you can write this like. So after 3 iteration, that means up to 3 decimal place our answer should be 0.202. In your examination they will give you range from 0.201 or 0.200 to 205 minimum. Okay, so beta, is it crystal clear to all of you? It's very easy na, bolo beta, easy hai na? This one is very easy. Crystal clear. Shall we move forward beta? Okay, very good. So one beautiful homework. Oh, कहाँ गया homework? Where is my homework problem? Wait, कहाँ चला गया? गलती से मैंने डिलीट कर दिया क्या? वेट बेटा. Where is your homework problem? इधर तो नहीं है रे बाबा, ये अलग है ये. वेट बेटा वेट. Secant मेथड. ओहो, एक ही मेथड कितने बार लगा दिया. ओके, ये यहाँ गलती से ही आ गया, इसे हटा देते हैं. वेट बेटा, आई एम शोइंग यू homework problem of वेट. फर्स्ट स्लाइड को सेव कर लेने दो, नहीं तो अभी गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगा. ओके, वेट. वेट बेटा, few more seconds. I am showing you. Yeah, this is your homework. This is your homework problem. Okay, it's very easy, and answer is 0.518. Okay, precaution: don't forget to change your calci in radian unit if you see any trigonometric function. Okay, अगर नहीं चेंज करोगे देन यू विल बी रॉन्ग. सो इसे परफॉर्म करेंगे बेटा, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग टेल मी टुमारो you are correct or not correct. So now I am proceeding to final method. After this I will define rate of convergence of all methods. Then this part, this sub chapter number 2 of main chapter number 1 numerical methods will complete. Okay, so next one is fixed point iteration method. What is this beta? In every method you had seen iteration, but this method name itself iteration method. This method name itself iteration method. Our full name is fixed point iteration method. It's very easy beta, but थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. Listen carefully beta. See here. Suppose we have a beautiful equation like fx equals to 0. 100% beta. If your main equation is not present in this form, then first convert that equation into fx equals to 0 form. That means all thing will be in LHS, and in RHS only 0 will be there. In this manner you will find fx. Okay, so this is my first step, and this step need not to do from your side because already given. If not given in your problem, then first convert that equation into this format. Okay beta. Now this equation I am going to express the above equation can be expressed as x equals to phi x. What is this? ये क्या है भैया? What is x equals to phi x? Wait beta,
Wait, I am showing you. No need to worry. My first problem is x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. तो इसी को ले लेते हैं ताकि इसमें टाइम भी बच जाएगा. ओके, सो सपोज एग्जाम्पल ले लेते हो यहीं पे. ठीक है, सपोज योर एफ एक्स इज गिवन and fx is x cube plus x square, x cube plus x square minus 1. This is your fx. Okay, very good. So x equals to phi x. X equals to phi x. How, beta? See here. What is phi x? See here. This equation can be written as in first manner. X cube equals to 1 minus x square. Then x can be written as 1 minus x square to the power 1 by 3. That means here our phi x is 1 minus x square to the power 1 by 3. Is it clear, beta? Is it clear? Tell me everyone, beta. ये clear है आपको? Is it crystal clear to all of you? What is phi x? This is your phi x, beta. But phi x is not fixed. कैसे चूज करेंगे वो अभी आपको बताते हैं. No need to worry. This is my phi x. But we may also calculate this phi x in this manner too. See, second manner. X square in LHS and x cube in RHS. In this manner, you can write x equals to 1 minus x cube to the power 1 by 2. देख लो बेटा. You can express this as x equals to 1 minus x cube whole power 1 by 2. In this manner, now this is our phi x. Now this is our phi x. 1 minus x cube पे 1 by 2. One more technique is there. You can also write this equation as, first take x square common here, then you got x plus 1, and this one in RHS you can write 1. You can see x cube plus x square equals to 1. Same to same equation. So here you can write x square equals to 1 upon 1 plus x, or you can write, this is your x square now. So you can write in place of x 1 upon square root of 1 plus x. Numerator 1 is also in a square root plus, but square root of 1 will be 1. So now beta, this is your phi x. In this case, our phi x is 1 upon square root of 1 plus x. Is it crystal clear to all of you, beta? Please tell me everyone. Clear है आपको ये ना? Everyone crystal clear? कि कैसे लिखेंगे phi x? Now which phi x? कौन सा phi x चूज करेंगे? Which one to choose? So it's very easy, beta. Choose phi x such that its first derivative value always take as positive. Suppose phi dash x, you got minus 3. That means take 3. Take it 3, not minus 3. Okay. So phi dash x at your initial guess must be less than 1. What to do if more than 1? More than 1 के केस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको. फेल भी कर सकता है मेथड. You need more iteration. Okay. Less than 1, that means you are closer to the root. If more than 1 give you closer than 1, less than 1 value, like in this numerical, my first numerical, this one, 3 possible cases are there, and all these 3 will give you less than 1 value. If you are going to take phi dash x, and at this initial value, initial value is not given, wait, initial value is also here, x naught.
This is given. I'm not adding from my side. This is present with your problem. Okay, initial value is given, already given here. Okay, so इस क्वेश्चन के साथ आपको इनिशियल वैल्यू देगा, दे विल गिव यू इनिशियल वैल्यू. सो इस इनिशियल वैल्यू पे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एट दिस इनिशियल वैल्यू, you will get all these three will give you less than 1. First derivative of all these three at x equals to 0.5 will give you less than 1. But the more closer to less than 1, मतलब जीरो के जितना पास होगा, लेस देन 1 जितना ज्यादा कम होगा 1 से, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं. इट कांट कम निगेटिव. व्हाई कांट कम निगेटिव? बिकॉज हियर मॉड इज प्रेजेंट. हियर मॉड इज प्रेजेंट, सो निगेटिव का तो सवाल ही नहीं होता. सो लेस देन 1 कितना छोटा है? जो सबसे छोटा, टेक दैट वन. ओके, नाउ सी हियर. Once you got 5 dash x. Once you got 5x dash. Once, no, sorry, 5x. Once you got 5x. Now, the successive iterations can be given as its iteration formula. Iteration formula can be written as it's very easy beta. So this iteration formula is very easy. wait कलर चेंज कर दें और इसे wait beta. Okay, so this iteration formula you can write as nth iteration xn equals to the value of phi at xn minus 1. एग्जाम्पल देख लो बेटा. एग्जाम्पल, if you are in first iteration, then phi x naught is your x1. Next iteration x2, then phi x1 is your second iteration. If x3, so phi x2 is your next iteration, and so on, etc. ऐसे बढ़ते जाएंगे, so on. So this is your method, iterative method, fixed point iteration method. I hope you all got the concept. I repeat, see here, in fixed point iteration method, first this should be your fx such that RHS is 0. Once you got this, the above equation can be written as this. That means only x will be in LHS. All things will be in RHS, such that the first derivative of phi dash x at x equals to x naught mod of first derivative of phi x at x equals to x naught must be less than 1. If more than must, yeah, more values, more phi x give you less than 1 value, no need to worry, you can choose any one. Or if you want right answer in very less number of iterations, then choose the one whose value is much closer to 0, whose phi dash x at x equals to x naught much closer to 0. ओके, अब ये और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब इस क्वेश्चन के साथ आप देखोगे बेटा. ओके, सो इट्स वेरी इजी. लास्ट मेथड, सी हियर, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा. सी हियर बेटा, find the real root of equation x cube plus x square minus 1 equals to 0 by using fixed point iteration method. Perform 4 iterations. Okay, I can perform 4 iterations, no problem. They can ask for more iterations in your examination, but generally for iterative method they will not give you number of iteration. I am giving here because I know answer. I performed for this problem, I performed 8 number of iteration, no sorry, 7 number of iterations. And I feel that from x4, x5, s6, s7 approximately same, and x6, s7 is totally same, but up to 3 decimal place x4, x5 is same. So I am writing here perform 4 iterations. In your examination maybe number of iterations are not there, so perform iterations until you get
same values up to given decimal places. You got same values in two successive iterations. Okay, so see here beta, for this question my fx is x cube plus x square minus 1. So I am going to write this equation as x square x plus 1 minus 1 इक्वल्स टू 0. आप दूसरे से भी कर सकते थे, हम ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इस केस में तीनों ही आपका लेस देन 1 आएगा. ओके, सो हियर x square can be written as 1 upon x plus 1, or you can write 1 plus x. So here x can be written as 1 upon 1 plus x पूरे पे स्क्वायर रूट, और x can be written as 1 upon square root of 1 plus x. Okay, so here my phi x is 1 upon 1 plus x. हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज मेरे पास है, कैलकुलेट किए हुए हैं टू सेव टाइम. आप दूसरे से भी करके देखना, सेम आंसर आएगा, नो नीड टू वरी. नंबर ऑफ इटरेशंस कैन बी चेंज. ओके, सो हियर you have to find phi dash x now. Phi dash x, so after differentiation your phi dash x will be 1 by 2 1 upon 1 plus x to the power 3 by 2. So please calculate its value at initial approximation, that is 0.5. चलो देखते हैं कैलकुलेट करके. 1 plus 0.5 to the power 1.5 to the power 1.5. okay, reciprocal multiplied by 0.5. you can see beta it's 0.2722 less than 1. I got. तो अगले पे चेक करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. एग्जाम में नहीं कि सब करते रहो और क्लोजेस्ट वाला खोजने लगो ना. एक बार कोई सा भी मिल गया ना, दैट्स इट. इफ योर इनिशियल गेस इज रॉन्ग देन राइट दैट इक्वेशन इन अनदर वे. If you got in first time, no need to worry. But in this case, beta, as I already told you, this one and this one will also give you less than 1 value. Both phi dash x at x not equals to 0.5 will give you less than 1 value. No need to worry. Okay? So एग्जाम में सारा करने का रिक्वायरमेंट नहीं, बस एक गैस मिल गया जैसे ही स्टार्ट कर दो. So that means our phi x is correct and our initial guess of phi dash x is correct. Initial guess of phi x is correct. So this is your required phi x. Once I got phi x, जैसे ही हमें phi x मिल गया बेटा, now अब क्या करेंगे after phi x, our approximation formula will be xn equals to phi xn minus 1. So it is xn equals to phi was 1 upon square root of 1 plus x. In place of x, I can write x minus 1. Now perform iterations. 4 iterations now. That means x1, x2, x3, x4. x4 will be our final answer. x4 will be our final answer. So put n equals to 1 for first iteration. Put n equals to 2 for second iteration. Put n equals to 3 for third iteration. Put n equals to 4 for fourth iteration. So here you will get x2, here you will get x3, here you will get x4, and this x4 will be your final answer. So x1, so phi x naught, that means 1 upon square root of 1 plus x naught was 0.5. So after solving 0 point, आपसे कर लेना, इसे हम कैलकुलेट किए हुए हैं तो no need to spend time again. And now here for x2 it's phi x1 means 1 upon square root of 1 plus x1. So 1 upon square root of 1 plus x1 was 0.81649. After calculation it will come 0.74196. आप कैलकुलेट करके चेक भी करना, ठीक है. And here phi x2, x3 will be phi x2.
So that means 1 upon 1 plus x2. So 1 upon square root of 1 plus x2 was 0.74196. After solving beta, it will come 0.75767. Okay. Now x4 will be 5x3. So this is 1 upon square root of 1 plus x3, and that becomes equal 1 plus x3. So 1 upon square root of 1 plus 0.75767. After solving you will get 0.75427. So this is your final answer. Up to 3 decimal place, your answer will be 0.754 after 4 iteration. अगर आप 7 iteration करते, then your final answer will be 0.75487. So up to 3 decimal place आता 0.755. Okay beta, is it crystal clear to all of you beta? Please tell me everyone, is it crystal clear? Easy है ना बेटा? Easy one. Easy one. Please tell me everyone बेटा, आसान है ना? कर ले जाओगे एग्जाम में? वेरी गुड, गॉट सेम वैल्यू सर, क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर। बेटा कैलकुलेटर आपको खुद चलाने का है, वर्चुअल कैलसी पे करके देख लिया करो, अदरवाइज सब कुछ सीखते हुए एग्जामिनेशन में अगर प्रैक्टिस नहीं होगी आपसे मिस्टेक हो जाएगा कैलकुलेशन। सो जो भी हम डायरेक्ट लिख भी देते हैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके चेक किया करो, अगर उस समय नहीं मिला तो बाद में आफ्टर क्लास, बट प्लीज चेक माई कैलकुलेशन एवरी टाइम, 100% केसेस में हमेशा ही चेक करो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और बहुत जरूरी है ये। ओके, so this is your beautiful homework beta, and for this homework a beautiful advice for you. When you got trigonometric functions in this method, no need to write x equals to in inverse form, like x cos x equals to itna, so cos inverse x or x inverse, no need to write. Okay, why? In that manner calculation will be lengthier. So for this, just one beautiful hint for you beta, choose your x like 1 plus cos x by 3, choose like this. So this is your homework hint. Okay, इनिशियल वैल्यू, ओ नहीं दिया क्या? वेट वेट वेट, इनिशियल वैल्यू इसमें हम टाइप करना ही भूल गए, कहाँ है बाबा इनिशियल वैल्यू? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कहाँ हो या इनिशियल वैल्यू कहाँ है? जीरो है शायद, या इनिशियल वैल्यू इज जीरो। गुड, वेरी गुड जयंत, नहीं तो कल कहते सर जी इनिशियल वैल्यू तो आप दिए ही नहीं थे, इनिशियल वैल्यू तो दिए ही नहीं थे। एंड बेटा डोंट फॉरगेट to change your calculator in radian unit for this problem. Okay, and answer is here, it's 0.617. Okay beta, so today both methods we had completed, today's both methods. Now one beautiful last topic is there, it will take approximately 4 to 5 minutes, that means अप्रोक्सीमेटली इन 1 आवर, टूडेज लेक्चर आप 1 घंटे के आसपास आज भी खत्म कर लोगे। ओके, सो दिस इज रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट मेथड्स, न्यूटन रैप्सन, बाइसेक्शन, रेगुलर-फॉल्सी, सेकेंट एंड फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, एंड ऑल्सो आई विल रिवाइज इट्स देयर इटरेटिव रेस्पेक्टिव इटरेटिव फॉर्मूला। ओके, देयर रेस्पेक्टिव इटरेटिव फॉर्मूला। रुको थोड़ा सा अपने आप को बड़ी में कर लें, इतना बड़ा तो चल कर सकते, इतना बड़ा हो सकता है। ओके, नाउ सी, जस्ट गिव मी फ्यू मोर minutes. One thing you must clear beta, if rate of convergence, see here beta, very important, if rate of convergence is 1, that means you can
write it as rate of convergence is linear. If this is greater than 1, then please write it as super linear. In mathematics से क्या कहते हैं बेटा? It is known as super linear. And if this is 2, then it is termed as quadratic. According to your syllabus, आपको ये 3 मिलेंगे. 3 वाला ऐसा कुछ नहीं है, ना आपके में है ना है. ओके, आप निकाल सकते हो, कुछ तो अच्छी बात होगी. Now see here. See here. Newton-Raphson method. You had already seen its rate of convergence is 2. With derivation, I had already showed you. Bisection method, it's linear. So rate of convergence is 1. And Regula-Falsi and Secant, I can derive, but for gate examination, these are not important. Derivation is not important, but I had so for Newton-Raphson method for your feeling कि ये होता क्या है convergence. What is convergence? Okay, so for Regula-Falsi method, it's 1.618, and because secant method is also another technique by using same formula of Regula-Falsi method, so its rate of convergence is same to Regula-Falsi or false position methods 1.618. For fixed point iteration methods, its rate of convergence lies between linear to quadratic. It may be linear, it may be quadratic, or it may be between these two. Depends upon choosing your phi x. आपने देखा ना कि एक से ज़्यादा phi x हो सकता है, एक से ज़्यादा phi x हो सकता है, जो आपको दे phi dash x at x equals to x not less than 1 वैल्यू. सो आप कौन सा चूज करोगे, इस पे डिपेंड करेगा कि आंसर के पास आप कितनी तेजी से पहुंच रहे हो, एरर कितनी तेजी से रेक्टिफाई होता जा रहा है. ओके, सो फॉर फिक्स्ड पॉइंट इंटरेक्शन मेथड इट विल डिपेंड अपॉन phi x. Okay, now one more minute beta, see here. For Newton-Raphson method, our iterative formula was x n plus 1, and that becomes equals to, hello beta Ayaz Ahmed, यू आर वेरी लेट बट नो नीड टू वरी. अभी ये सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब से हटने वाले नहीं हैं, तो इसके पहले के भी हम चाहेंगे बेटा लेक्चर 1 2 3 4 भी आप कंप्लीट कर ले, बहुत मज़ा आएगा. मैथमेटिक्स में 13/13 आपको हम दिलाएंगे, ठीक है. बट आपको अपने साइड से क्या करना है, सभी लोग बेटा ट्राई टू ज्वाइन क्लास लाइव. लाइव ज्वाइन करते हो तो उतना और अच्छा लगता है. इंट्रेंस थोड़ा इंटरफेयर बच्चे करते हैं बीच बीच में, ढेर सारे सर ये होगा वो होगा, तो अच्छा लगता है थोड़ा. तो कोशिश करें कि सभी लोग बात पे ना छोड़ें. ट्राई टू कंप्लीट दिस लेक्चर सीरीज, लाइव में ही कंप्लीट कर लो ताकि कुछ भी एक्यूमुलेट ना हो चीज़ें. फ्रेंड्स के साथ लिंक्स को भी शेयर कर दिया करें. ओके, सो दिस वाज एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स वन. आई होप हमने करेक्ट लिखा है. ओके बेटा, फॉर बाइसेक्शन मेथड द इटरेटिव फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी. It's a plus b by 2, and always for each iteration choose a, choose b such that ab fa into fb is less than 1. In Regula-Falsi method, your iteration formula was, again this one can be written as a fb minus b fa and whole upon fb minus fa, and choose FA, FB, A and B such that FA into FB is less than 1. And here this one you can write as x n plus 1 equals to x n minus 1 into f x n minus x n f x n minus 1 and whole upon f xn minus f xn minus 1. And in this one, first write x equals to phi x such that phi dash x at x equals to, or x naught at x equals to x naught. Wait. At x equals to x naught such that its value less than 1. Once you got this, then your approximation x n can be written as
phi, this is not phi dash beta, phi, okay, phi x n minus 1, this is your approximation formula. Okay beta, is it crystal clear to all of you? Oh sorry, यहाँ वन लिख दिया हमने, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई मुकुल जी। लेस देन जीरो निगेटिव होना चाहिए ना, हम इसके वन में खो गए थे, इस वाले वन से प्यार हो गया था फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में, सो वहाँ हम वन की गंगा में बह गए, आप मत बहना। ओके, सो एफ इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो। सो दिस इज योर फाइव important formulas, five important methods in solution of algebraic and transcendental equations. I hope beta you enjoyed this subchapter 2, and for today that's it. And don't forget to revise your notes every day बेटा, केवल मैथ ही नहीं पढ़ने हैं, सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स आप अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच, जिस भी ब्रांच में हैं, मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ा रहे ये हर एक ब्रांच के लिए है, जिस भी ब्रांच में आप हैं, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स एवरी वीक बेटा। भले वो सब्जेक्ट आप 2 ही घंटे के लिए क्यों ना लो कॉपी उठाओ, बट ऐसा अगर नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम में आपको लगेगा सब कुछ आप भूल गए हो एंड मिक्स हो रहा है। ओके, so I must do my revision daily, 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 I must do my revision daily. If uh, you want any rank between 1 to 100 or 1 or 100, 2 digit or 1 digit rank अगर आपको चाहिए, so revision is the key of success. Okay, finally I will take few more seconds again. Don't forget to share or join this beautiful batch, pure numerical batch. Okay, इस batch के बारे में, as I already told you, in this batch you will get live lectures till your GATE 2023 examination. Okay, and also you will get all previous recordings, 250 plus numericals already. We had solved new numericals, and it will, you will get here more than 300 books, numerical, standard numericals and their theories. उन सबको मिला के आई कन्वर्ट दैम इनटू गेट फॉर्मेट न्यूमेरिकल्स, न्यू न्यूमेरिकल्स। ये नहीं कि पीवाईक्यू उठाया, पीवाईक्यू का डेटा बदल दिया और लाके रख दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो अलग है पीवाईक्यू। इन दैट केस इसका वेटेज जो होगा, इट्स वेटेज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 80%। रिमेनिंग 50% वेटेज जो न्यूमेरिकल्स बेटा हमने लिए हैं, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 1983 to 2000, important numericals between from 1983 to 2000, and remaining 5% important numericals of 2001 to 2022. Not all numericals, I'm not going to discuss all PYQs. Okay, I will discuss ओनली इंपॉर्टेंट PYQs जो हमको लगे कि इस कॉन्सेप्ट पे ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कॉन्सेप्ट पे और ढेर सारे क्वेश्चंस बनते आए हैं, और एक से ज़्यादा बार ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक है, so don't forget to join this beautiful batch beta. Its price very less, 5999, and based upon your performance you will get 30 to 50% discount. This is running right now. 3 महीने अभी आपके बचे हुए हैं, समझ सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपसे कुछ भी, लगभग कुछ भी आपसे लिया नहीं जा रहा है, जितना कुछ आपको बेटा वहाँ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इवन यू कैन टेक आफ्टर ज्वाइनिंग इट 3 days 100% कैशबैक गारंटी। ओके, 100% कैश, टोटली रिफंड गारंटी। अगर आप 5 6 7 लेक्चर देख लिए उस 3 दिन में, 3 दिन में 10 लेक्चर देख लिए, आफ्टर दैट यू आर नॉट फीलिंग कि सर ने जो न्यूमेरिकल आपके लिए फॉर्मुलेट किए हैं वो गेट के जैसे नहीं, या उतनी बेहतरीन नहीं, उससे आपकी रैंक नहीं आ रही, आप 100% पैसे अपने रिफंड ले सकते हो बेटा, 100% विदाउट एनी क्वेरी, अगर न्यूमेरिकल्स बेस्ट ना हुए। बिकॉज बैच में बेटा हमने बहुत मेहनत की है, एवरी डे। अभी आपका लेक्चर खत्म हो रहा है ना हमारा, अभी फिर 2 घंटे बैठ के आपके लिए बेहतरीन न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रोज बनाते हैं आपके लिए। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू कंप्लीट दिस प्योर न्यूमेरिकल बैच एंड दिस पीवाई इंपॉर्टेंट PYQs, आपसे आपकी रैंक कोई ले ही नहीं सकता है बेटा, क्योंकि एवरी टाइम आप पढ़ते हो, जो मेन चीज़ आपकी रह जाती है दैट इज योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते, लास्ट तक नोट्स को ही पढ़ते रह जाते हो, रिवाइज करते रह जाते हो।
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो कहीं से भी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो यहाँ आके, आपका काम बेटा 100% हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बेटा। ओके, टेक केयर, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। You can leave now beta, lecture will end in the next few seconds. I am saving. You're all welcome beta, you're all welcome. Those who joined late, recording is available on YouTube. Complete it beta immediately. और second चैप्टर इफ़ यू वांट ऑन यूट्यूब, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स को आप बढ़ाएं, सबको बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते नहीं और कुछ अभी सुस्त हैं, सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो बाद में तो आएंगे ही नहीं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में, अभी लगभग 3 लेक्चर्स इसमें बचे हुए हैं, सो शेयर इट मैक्स। ओके, उसके बाद फटाक से अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही आपका ये खत्म हुआ तुरंत ही हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपकी। ओके, इट मे बी प्रोबेबिलिटी, इट मे बी मैट्रिक्स। ओके, ऑल द बेस्ट वंस अगेन बेटा, टेक केयर, very happy good night, very happy good night beta Mukul and all.